we are currently at the Saran Gate, right? Now this is the Saran Gate, and there are two more gates, which is the Western Gate, which after this will go here, the Western Gate, which is adjacent to the underpass, all right? The Southern, the Eastern, and the Western, and most probably there may have been one more gate. Uh, Most probably, of which we do not have any records of those. Government of Arunachal Pradesh यहाँ पे signboard लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि in absence of any written records, they assume that this was built by Ramchandra of Jitari dynasty in the 13th or 14th century. But there are many historians who believe that the date given by some historians, 13 and 14, is not accurate, and they push the date a little bit further. And for example, Leela Gogoi, for example, she says that Kita Fort को जो है वो 17th century में 1668 में बनाया गया है. There is a controversy as to who built it, किसने बनाया है. और इसको ज़्यादा समझने के लिए हमें ये भी जानना है कि किसी भी चीज़ को हम जब बनाते हैं तो वहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है, लिखावट मिलता है कि ये सच एंड सच राजा ने बनाया गया है. और फिर हमें ये भी मिलता है, कॉइन्स वगैरह मिलता है, जिससे हम डेट कर पाते हैं कि अच्छा ये राजा महाराजा रानी जिन्होंने भी बनाया. लेकिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी डू नॉट हैव नंबर वन रिटन एविडेंस, ठीक है, और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. Even after excavation, they could not come up with any substantial, evidence to point out that this is the ruler. What we have is folklore, all right, and the very fascinating folklores which are there in the Nishis, and we also see a similar sort of folklore in Assam as well. From 1901, we get another reference to this fort, and this was by G.S. Lightfoot. G.S. Lightfoot also came and visited here in 1929 to 1941, but he does not talk about this Ita Fort, any ruins, remnants of historical place. He does not talk about it. So after B.C. Allen, we see that in 1942, D.N. Das actually came and he wrote about this fort, and he also collected these Nishi folklores in which these ruins were called Hita Rokpo, or later on in 70s as well, B.B. Pandey had also connected yet another Nishi folklore in which this is not called Hita Rokpo but called Itayopa. Okay, so there are two different versions of this Ita Fort, and you will find in these are slight variations of the main story, which is taken from Assam. So this story is about Arimata, all right, and this is a very tragic story, and this story may have been, may have served not just Assam but also to the Nishis of that time, that patricide, right? Killing your father is called patricide, is something which one should always stay away from, and serve as a reminder that we should not indulge in such. So this is a very tragic story. B.B. Pandey collected yet another story, and that story actually connects this fort with Ganga Lake, which we in Nishi we call Geka Singh, right? में अहोम किंग जो ये था प्रताप सिंह के समय था, आप लोग को पता होगा, पोसा सिस्टम देना शुरू कर दिया गया था, ठीक है. पोसा सिस्टम इसलिए दिया गया था कि यहाँ के लोग वहाँ जाके रेड ना करें, ठीक है, वहाँ पे टहस में जो तबाही करते थे अपार्ट फ्रॉम रेड, तो वो नहीं करने के लिए जो है जो अहोम का जो राजा था वो उन लोगों को जो है यहाँ के निशी लोगों को पोसा दिया जाता था. बट इवन आफ्टर दैट वी सी दैट दे kept on creating troubles for the Ahom kings. So that's why we get to know about these punitive expeditions in 1646. All right, this was during the reign of Norya king, and then in this expedition 1646-47, they were actually defeated by the Nishi. And for the first time, we get to hear about this in the Bandar-Dua Hills, all right, and see they talk about how there was this. The Nishi people, they did not use the word Nishi, they use the word Chungi, okay, for the word Nishi. Chungi शब्द का प्रयोग किया गया है, और चुंगी अगर आसामी शब्द में देखेगा तो there is something related with चुंगा, right? The one who lives in the holes or something like that. जो bamboo का, हम bamboo चुंगा भी तो बोलते हैं ना, चुंगा is like hole only, right? So the word that they use for the Nishi is चुंगी. उन लोग को ये कहते हैं कि जो है निशी लोग जो है फिर जो हमारा फोर्स को जो अटैक करके फिर जंगल में गायब हो जाता है और हम उसको फिर परस्यू नहीं कर पाते. ऑफ कोर्स दे हैड नो आइडिया अबाउट दिस टेरेन एंड आल्सो द टैक्टिक
of the warfare of the Nishis. So it was a big, defeat for them. So next year फिर उन्होंने भेजा expedition in 1648 भेजा और भेजने के बाद we see that they actually forced Nishi to retreat to the hill area. So there's one way to look at it is that Ahom people came and they built this. These are kind of bricks, different bricks used in constructing this site, and there should be see here this entire area comes is what Ita Fort is all about. ठीक है, see ये बहुत पुराना मैप है. तो temporary capital Naharlagun was temporary capital and the permanent capital was here, but at the time it was called Itanagar and New Itanagar. तो ये कंट्रोवर्सी जो है जितारी डायनेस्टी वाला है या फिर अहोम का है has not been solved yet, but there are difference of opinions. Eastern Gate, which is in bad shape, ठीक है, राजभवन के सामने है, and this is our southern gate. We'll go there and see. यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है ना. We do not need construction of wall here because of the hillock there. Now here, and you will find that यहाँ से ये जो देख रहे हो ना नीचे तक है. इसके बाद सी यहाँ पे ब्रिक रेमनेंट्स हुआ करता था जो कि ईटानगर शहर का जब स्थापना हुआ था वहाँ पे. Today I have organized a heritage walk which is led by Assistant Professor Duliete from Daranatum Government College. The main purpose of organizing this heritage walk, what I say is that the importance, the significance of organizing such heritage walk is that we, the new generation, not next generation, new generation has to understand the tradition, the culture, the history that we carry from centuries. We need to understand that. We cannot rely on the information that been stored, that been extended to us by the outsider, or maybe from the people who is not related to our state, or maybe the people of our state. We need to build up our own, contribution, own understanding, own dialogue, own communication. So hence, I took the children, especially the youths of Itanagar CRC, and then CRC Ganga, then CRC Chandanagar. CRC is Christian Revival Church. So I collected the youths from there, and since my alma mater is from there itself, so I collected them. I took them here to Ita Fort to make them understand that our history, our beautiful history lies within here. तो ये सब बातें समझाने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि by such kind of doing activities, maybe say heritage walk, maybe say nature walk, maybe say food walk, maybe tradition walk, by doing all this small activity, we can explore, we can understand that what our forefather, what our ancestors were actually. तो उनको पता चलेगा. And by doing such activity we can remove our certain prejudices, certain जो ignorance है तो वो सब remove कर सकते हैं. तो और ये भी है कि ऐसा जो हेरिटेज वॉक करा के बच्चों के साथ उनको बता सकते हैं कि देखिए हमारा स्टेट जो है कितना अद्भुत है, कितना महान है, इसका जो है इतिहास जो है कितना एक बहुत विशाल है, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो कभी गलत तरीके से लोगों को बताया जाता है, सही तरीके से भी बताया जाता है. वो सब चीज को उन लोग समझ सके, साथ में डायलॉग में पार्टिसिपेट कर सके, डिस्कोर्स कर सके, कम्युनिकेट कर सके. और यहाँ तक की है सच काइंड ऑफ एक्टिविटी
endorses that our जो ancestor है, what kind of techniques, science, what kind of understanding they have used to build up such kind of state, such kind of giving us a heritage. किस प्रकार से हमें ये जो हेरिटेज हमारे पास हुआ, कैसे आया हमारे पास, एक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगा once we do all such kind of activity. और ये जो है in terms of education perspective, this is very educative. This is considered as a outdoor learning, जो कि हमारे स्टेट में जो एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं. क्योंकि ये सारा अगर बोला जाए तो हमारा खुद का कोई एजुकेशन स्टेट पॉलिसी तो है नहीं, तो उसमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं कर पाता है कि कोई एक्सपर्ट नहीं है बेसिकली, कि उन लोग डिसाइड नहीं कर पाता है कि बच्चों को किस तरह से उनका जो लर्निंग प्रोसेस है, उनकी जो इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है, उसको कैसे करके एक फीडिंग दिया जाए. तो इसी तरह अगर हम जैसे लोग जो कंसर्न सिटीजन है बच्चों को लेके आके ऐसा आउटडोर लर्निंग कराएंगे, तो क्या है उनका जो इंटेलेक्चुअल जो विजन है, जो आपका एक लिमिटेड है अभी, वो एक्सपांड होगा. वो जो है एक फर्दर जो विजन को उसको इग्नाइट करेगा. So these are the objectives which I have put in my mind, and I have organized such kind of walk. Not only heritage, I have been doing many other walk that is related to food, tradition, culture, as I stated before. तो ये सब सारा कराया, and I'm very happy the students who have participated, not only from churches but from different colleges also. आपका दरा नातुम कॉलेजेस से भी आया है, फिर कोई प्राइवेट कॉलेजेस से भी है. They were very happily participating, and they were very happy to learn that we do not have one story or one narration attached to all those historical monuments which we have here. There are different varieties of narration. तो अब क्या है, now क्या है कि हमारे ऊपर responsibility बनता है how to get the correct information and how to bring these kind of narration into one platform, जहाँ में हमें जो हमें गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा, रादर हमें एक कॉन्क्रीट, एक्यूरेट और करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ आगे ले जाएगा. एंड इट विल ओपन अप मेनी प्लेटफॉर्म एंड स्कोप फॉर द स्टूडेंट्स टू डू फर्दर रिसर्च ऑन इट. तो ऐसा है, तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है. थैंक यू. Hello, my name is Dulu Yatta, Assistant Professor at the Department of History, Deranathan Government College. Today I am with students from my college, DNGC, and also from Government High Secondary School. And we have organized a heritage walk today at the Ita Fort. Our first stop is here at the Southern Gate, and from there we'll go to the Western Gate and we'll also visit the museum there. I'm very happy that the public are taking much interest in the heritage walk, and I would like to thank Dr. Meena Madam for sponsoring us and also taking much interest in providing much needed encouragement in conducting this heritage walk. Thank you. I want to thank जिन्होंने इस ये हेरिटेज वॉक को ऑर्गेनाइज किया है, मीना दी एंड दूली अते सर को मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा. उनके कारण आज हम सभी यहाँ पर हमारे सीआरसी ईटानगर के यूथ और हमारे डीएनजीसी के स्टूडेंट्स यहाँ पर ईटा पोर्ट पे आए हैं हेरिटेज वॉक के लिए. और हमें यहाँ पर बहुत कुछ जानने के लिए मिला है इस ईटा पोर्ट के बारे में और हमारे जो ईटा पोर्ट से जुड़े हुए हिस्ट्री के बारे में, जिसके कारण मैं भी हमें विश्वास करता हूँ कि हमें ये सब जो हम आज नॉलेज हमने गेन किया है वो हमें फ्यूचर में काम आएंगे, स्पेशली हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हमारे होते हैं अरुणाचल के, लाइक एपीसीएस एंड ऑल. तो जैसा कि नॉलेज कहा जाए तो हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में कि ईटा पोर्ट के एग्जैक्टली हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट में किस प्रकार का सिग्निफिकेंस है और इसका आगे फ्यूचर में जाके किस तरह का महत्व रहने वाला है, हमें और पता चला कि इस ईटा पोर्ट को एग्जैक्टली किसने बनाया था और किस प्रकार का भी रिसर्चर्स इनके बारे में और जानने के लिए कर रहे हैं. और यहाँ पर पहले बहुत कुछ हुआ करता था लेकिन अभी जो नहीं है वो सबके बारे में भी हमें पता चला है. तो आई रियली वांट टू थैंक जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया है. सो मैं विश्वास करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार इस तरह के हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज करेंगे और
आने वाले जनरेशन्स को भी इस तरह के हिस्टोरिकल एरियाज के बारे में बताएंगे। थैंक यू। First of all, I would like to start with a quotation. A person without its history, culture, origin is like a tree without its root. So, hi everyone. My name is Oin Kombo, and I'm a student of DNGC. I have taken history as my major subject, and I'm really very much thankful to our Tokomina ji and Duliete sir for inviting us into the heritage walk. And I'm really grateful to whatever knowledge they have shared with us. You know, when we were a small kid, we often used to hear about this Ita Port. हम जब बचपन में होते थे तो हम अक्सर Ita Port के बारे में सुनते थे, but I never have any kind of knowledge about this Ita Port. I always used to think that ये Ita Port किस लिए है and what is the importance of this Ita Port. But as I grew up, मुझे थोड़ा इसके बारे में पता चलने लगा कि Ita Port का ये importance है और ये एक historical वाला place है. But today, after this heritage walk, I have got more clearance from our professor Juliette sir. तो मुझे पता चला Ita Port के बारे में, इसके history के बारे में, इसके origin के बारे में. What was the purpose of building this Ita Port? I'm really grateful to our government of Arunachal Pradesh and as well as to all the historian and archaeologists जिसने भी ये Ita Port को excavate किया है, इसके ऊपर में research किया है, and because of this today we are here, and because of this Ita Port we got the name Itanagar. So I'm really grateful to this. और मैं यहाँ के government को भी और ये बोलना चाहूँगी कि आप you are doing great, and at the same time it will be more great कि आप अगर इसके ऊपर में और इसको और मेंटेन करने के लिए यहाँ पे और काम करें तो. My name is Abom Dui from Deranatun Government College, 5th semester student of History Department. Hello, my name is Anya from Deranatun College, Itanagar, 5th semester. History is my major paper. We are very thankful to our Tokomina ma'am for taking such initiative and sponsoring today's Heritage Walk program. And also we are thankful to Sir Julie Ite, Assistant Professor of Deranatun Government College, Department of History. जो भी हमें विजिट करता है प्लीज गंदा मत कीजिए ना, ये हम लोग का हिस्टोरिकल साइड ये जो है उसको आप सुंदर से रखिए ना. आपका एक इनिशिएटिव भी बहुत बड़ा हेल्प करेगा, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट द सिटीजन आल्सो. थैंक यू.